Well, welcome to the 19th Level Up series. And I'm sure we're all excited because it's all about beyond boundaries. When I even listen to this word beyond boundaries, it brings up so many connotations. Geographical boundaries, or when you're looking at the corporate, is that across, departments, like from HR to business to technical? What does it really mean? And when we look at our wonderful speaker for today, Vijay Jain, you will be amazed at how many boundaries he has been crossing in so many different ways. So, before we give you the introduction of Vijay Jain, let's just talk about what it is today. And we will be starting with the main program. We will have time for question answers, so do think about it. Individual interaction or personal interaction with Vijayji also is possible at the last part, where you can unmute and ask your questions directly. It is the JPF mentorship program, and we will let you know how you can be part of it, how you can contribute, how you can really benefit, as well as take this mentorship program forward. So, on that note, we'd like to know, so that we can customize this program for you, who is really present, and we'd like a little bit of personal information. So I'm going to be putting up a poll, just two basic questions about approximate age group and what type of job or work environment you really are in. So just a couple of seconds to answer this. Would request everyone who is attending to please answer this. Yeah, I can see numerous people are answering. And another request while this is happening, if you're able to come on camera, we would all love it. It's a very small group. uh, the intimacy, the connect. And some of you may have just heard Vijayji talking. He says, I really don't like so many Zoom meetings. I prefer in-person meetings. And so can we get it as close to in-person as possible by seeing you there, so that we can actually see the reactions, you can see us. Okay. Thank you so much for answering this. Let's look at what it is. I'm sharing the results. So, as we had anticipated, there are at least two people who are below 20 years of age. Majority fall in the 20 to 30 in this group today. And if you look at 30 to 40, 40 to 50, hey, there's nobody above 60. No, just a few of us who weren't part of the poll. It's okay, Sushma ji. You don't have to point out. Okay, and in terms of how are we really employed or not? Yeah, so 30 corporate job, running my own business and company, and something else. So those who are in other, would love to know. You could write in the chat box as to exactly what you do, so that we can customize this whole content for you and make it meaningful for you. So feel free to use the chat box. We have our wonderful team of Sayog, Ritu, Ajay, Amol, all constantly monitoring the chat box. So, it will be looked at. So thank you so much. So Vijayji, I think we got an idea of जी who is our audience today. जी And now I'm sure people are excited. Some of you may already know Vijayji. He is one of our wonderful mentors. He has been associated with JITO for numerous years. He has such vast experience, and that's the amazing part of the whole thing. Vijayji
has been working in the corporate. He is a technocrat with over 27 years, so close to 30 years of global experience. And when I say global experience, he has traveled to 98 countries in the past 25 years. Boundaries, crossing them, going beyond, right? He is a venture capitalist and he has been in philanthropic uh, assignments area for the past 8 years. He says he just loves it. It's such a delight to talk to him because he comes from a space of giving. He's so giving, so humble. It just doesn't show that, he has been into mergers and acquisitions. He does lots of market evaluations, and he's been doing so many of these things and vendor development, technology creation, amazing. And he continues to do so many things. So that's one part of Vijayji when we say boundaries. The other part of Vijayji is all about the Jain part. So he has done a lot of deep research on things like the Rishi Mandal Stotra. When he told me that, I was like, okay, someday we've got to get together. I got to learn this one part to you, right? He has read the philosophy and he's deep into philosophy and he's gone right from 300 BC all the way up to 1905. Now, do you think there could be anyone better than Vijayji to really take us on this topic of beyond boundaries? I don't think so. Amazing things to learn from all our mentors. And today, Vijayji, you're in the spotlight, and we're really looking forward to learning a lot from you on Beyond Boundaries. Over to you, Vijayji. थैंक यू सुषमा जी, दैट वाज सो काइंड ऑफ यू। जय जिनेन्द्र जी की सबको। आज संडे का दिन है, सुबह सुबह मुझे पता है कि स्पेसिफिकली नॉर्थ में तो सब लोगों को जाना होता है कहीं ना कहीं बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यू हैव मेड टाइम फॉर दिस सेशन, रियली अप्रिशिएट इट। ओके, सो looking at the poll and the audience, I think let me just start with something from where I come from. मेरी बैकग्राउंड एक छोटे से शहर से है, रोहतक हरियाणा से। मैं वहाँ से जब गया कॉलेज में आईआईटी खड़गपुर में, तो मेरा मीडियम ही चेंज हो गया था। हिंदी मीडियम में पढ़ा मैं कि एक त्रिकोण होता है और वहाँ पे जाके वो बन गया एक ट्रायंगल, एक अणु बन गया एटम। तो बहुत पहली बाउंड्री मुझे जो क्रॉस करनी पड़ी वो वही थी। तो इट वाज ए लैंग्वेज बाउंड्री, ओके, एंड ह्यूज कल्चरल शॉक एज वेल, क्योंकि घर में रहते हो तो मम्मी पापा आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, चलो आप एडमिशन की तैयारी कर रहे हो तो कुछ नहीं करना है। और वहाँ जाके किसी ने पूछा नहीं पूछा, हॉस्टल में जो भी बना है वही खाना है। तो वो बाउंड्रीज जहाँ से शुरू होती हैं क्रॉसिंग, एंड आई मीट सो मैनी पीपल एंड यंग पीपल नाउ डेज, लोग सिर्फ यही बात करते हैं कि सर हम ना ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में नहीं जाना चाहते, हमें यहीं अच्छा लगता है, यहीं पे कोई और दूसरा रोल देखेंगे। क्योंकि तो आज के टाइम में जो हम हमारा माइंड सेट हो गया है वो हो गया कि बस जहाँ पे हैं वहीं पे उसी सिटी में, क्योंकि फ्रेंड सर्कल वहीं है, एवरीथिंग इज ऑल अराउंड, तो वी फील वेरी कंफर्टेबल इन दैट जोन। एंड क्रॉसिंग बाउंड्रीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट, एंड ए लॉट ऑफ रिसर्च वर्क हैज़ बीन डन ऑन दिस। एक बहुत फेमस बुक भी है, हु मूव्ड माई चीज, राइट, दैट इज अबाउट चेंज। So that change in itself, in a if in a very normal term, if I have to say, is boundary, okay, in certain ways, okay। तो आज जो अपने बात करेंगे इसके ऊपर, बेसिकली क्या है कि बहुत तरीके की बाउंड्रीज हैं हमारे करियर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। एक हो सकती है कि आप एक कंपनी में हैं, आप एक रोल में हैं, मान लीजिए कि आप आज के टाइम में आप कस्टमर सपोर्ट में थे और कस्टमर सपोर्ट से आप जाना चाह रहे हो डेवलपमेंट में।
तो दैट इज अ ह्यूज चेंज, इट्स नॉट ए सिंपल चेंज। ओके। और आप एक ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सिटी है या आउट ऑफ सिटी है या और कहीं है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे भी बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ योर मेंटल बिल्टअप इज एंड व्हाट योर बैकग्राउंड्स आर एंड सो ऑन। Then it's about skills. Most importantly, I can be in sales. ओके, और अब मैं R&D में चला जाऊं तो मेरा माइंडसेट ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। और फिर ज्योग्राफीज, लाइक आई वाज मेंशनिंग अर्लियर, अब आप यहाँ से जाके US में लोग बाग जाना चाहते हैं, वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं या कहीं पे भी जॉब करना चाहते हैं, तो वो एक ज्योग्राफी का भी जो क्रॉस ओवर है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक नोट ऑफ। ओके। तो मेरी लाइफ के अंदर मैं खड़गपुर से गया कनाडा इन ए रोल ऑफ ए साइंटिस्ट। ओके। साइंटिस्ट से आई हैड टू स्विच द रोल विद इन नोटल टू सेल्स साइड, प्रोडक्ट लाइन मैनेजमेंट से, because I was selling so much product to all the telcos. Okay. And when dot com bust happened in 2000, early 2000, all these equipments were of no use for all these telcos. तो मैं उनको 10 गीगावाट का 10 गीगा बाइट्स का मान लीजिए एक सिस्टम मैंने बेचा उन्हें। तो उस समय कोई एप्लीकेशन ही नहीं थी कि जो गूगल था वो भी उस समय सिर्फ बेटा वर्जन चल रहा था। देर वॉज नथिंग लाइक यूट्यूब वगैरह, तो भूल ही जाइए आप। तो आपको स्पीड चाहिए किस लिए? 256 kbps वॉज गुड इनफ फॉर सेंडिंग ईमेल्स, राइट? और आप अब लोगों को बोल रहे हो कि हम आपके घर में 10 MB का कनेक्शन देंगे या आपको फ़ोन के ऊपर हम 4 MB देंगे, तो वो नो बडी इवन अंडरस्टूड इट, राइट? तो टेलको सेड कि भाई तूने हमें बेच तो दिया, अब हम इस धंधे को मोनेटाइज कैसे करें, उस इन्वेस्टमेंट को मोनेटाइज कैसे करें? तो अब तुम आओ हमारे पास और यहाँ बैठ के इस धंधे को चलाओ और बताओ कि क्या एप्लीकेशंस लेके आओगे। तो दैट वाज अनदर रियल रोल चेंज, राइट? एंड आई विल कम टू दैट व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस जर्नी टू यू। वहां से जब हो गया, पूरा रोल आउट हो गया, सब कुछ हो गया पूरे कंट्रीज के अंदर, वी डिड ए मेजर एक्विजिशन, 98 कंट्रीज का नेटवर्क वी एक्वायर्ड ओवरनाइट। अब उन सबको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के अंदर कोई किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो किसी को फ्रेंच नहीं आती, तो किसी को मैक्सिकन नहीं, स्पेनिश नहीं आती, तो इट वाज ह्यूज 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 चर्न, राइट? आप वो करते हो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने के बाद दैट इज अनदर रोल कंप्लीटली, इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज यू नीड टू ब्रिंग देम ऑन द सेम कल्चरल लेवल। तो अगेन वेरी डिफिकल्ट, डिफरेंट रोल। देन come to India back working, because never had worked in India, culture is completely different। वहां पे आपका 8 घंटे का डे होता है, तो आपका 8 घंटे का डे होता है, आपको 8 घंटे काम करना है। यहाँ पे मैं आया तो शाम को 5 बजे तक तो काम ही शुरू नहीं होता। 5 बजे के बाद सारे बिल्कुल एक्शन में आते और 8 बजे तक काम कर रहे हैं। और वहां मुझे आदत थी सुबह 7:30 बजे ऑफिस पहुंच गए तो 4 बजे घर। तो ये जो लाइफस्टाइल के हैं सारे के सारे चेंजेस हुए। बाकी कल्चरल चेंजेस यहाँ पे भी, आई वर्क फॉर स्टरलाइट इनिशियली, इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वाज सेलिंग प्रोडक्ट। Then when I was president and CEO at Reliance, then I was again buying products, अगेन कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड में अपने एग्जाम्पल से, वो ये है कि आई हैव ट्रांसफर्ड सो मैनी थिंग्स इन डिफरेंट रोल्स, एंड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई वांट टू जस्ट शेयर विद यू एक काइंड ऑफ चेकलिस्ट दैट, जो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड यू कैन यूज दिस एज ए चेकलिस्ट गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ। यू कैन कीप ऑन एडिंग इट मोर मोर इंफॉर्मेशन टू इट। द इंटेंशन इज कि आप ये समझें कि क्या क्या रिस्क जो हम लोग कभी सोचते भी नहीं है, क्या क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए। और इसके अंदर मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जॉब के अंदर ही आई हैव बिकम एन एंटरप्रेन्योर since last 7-8 years, right? And I am supporting entrepreneurs also because I'm investing in the startups, right? तो ये जो पूरे रोल्स हैं, इन सब के अंदर एक कॉमन जो है स्ट्रक्चर निकल के आता है, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके दिमाग में या आपको जिनको दिमाग में रखना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग हेयर।
ओके। तो आप जिस भी रोल में हैं, आप स्टार्ट ऑफ योर करियर हैं, मिड करियर हैं, आप बिजनेस में हैं, या आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, या आप स्टार्टअप से वापस जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो आप अगर इफ यू विल लुक एट ऑल दीज पॉइंट्स, ओके, देन आंसर्स विल बी समवेयर देयर। बट only thing is you will have to do this exercise very honestly. Okay, that's the only requirement. If you don't do Sure. it, अगर आप बायस होके करोगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं Sure, आप for sure. Vijay ji, thank you so much for this fantastic background. I am just pausing for a minute. I would like to check with everyone and also share that in the JPF feedback that we keep collecting from y'all, we had the request that it be in a mix of Hindi and English, since a number of our participants, are more familiar and comfortable with Hindi. So one just wanted to check with everybody who is present today. Is that okay with all of you, or is there anyone here who would rather have it only in English? Okay, okay. There are some, so yeah. So we will be mindful that maybe, and so for those who have requested English only, we need seek your permission that we will speak in Hindi as well as English and make sure that nobody misses out on the content. I hope that's okay with everybody. And Vijayji, that's a request to जी you जी जी, too. no no no, Thank you. no worries, no worries. Actually, it's better because I also prefer English. That's what I call it. So you can see the screen, right? Yeah. Yes. Yes, sir. Okay. Please go ahead. So let's jump into it. Okay. So basically, as I had mentioned, that there are four different ways we can look at it: role, organization, skills, geography. रोल आपका किसी भी सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन से आप मूव कर रहे हो, स्किल सेट आपके पास है कि नहीं, ज्योग्राफी में किस में आप हो, कहाँ पे आप मूव कर रहे हो, वेदर ऑल दोस थिंग्स फिट इन, does it even make sense for you to take a step to make this transition? Okay, तो सबसे पहले बिहेवियरल के ऊपर बात करते हैं. लेट्स टॉक स्टार्ट विद व्हाट बिहेवियरल attributes that one should think about and one should know. आप लोगों ने सुना होगा कि ये दो तरीके के आपके थॉट प्रोसेसेस रहते हैं, और एक कल्चर रहता है, वर्क कल्चर. वन इज लीनियर, वन इज सर्कुलर. ओके, सो यू कैन रीड ए लॉट अबाउट इट ऑनलाइन आल्सो, and there are lot of evaluation, online evaluation softwares also, where you can basically select go through the evaluation, and then you will know that what is your thinking, whether you are linear thinker or you are a circular thinker. So आपको एग्जांपल देता हूँ. जितने भी आर एंड डी के अंदर, अगर आप आर एंड डी के अंदर हैं, तो यू कैन नॉट बी ए लीनियर थिंकर एंड गुड रिसर्चर. ओके, एग्जाम्पल के उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको. तो और अगर आप सेल्स के अंदर आप सर्कुलर हैं, तो इट विल नेवर वर्क. तो एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि आई एम गोइंग फॉर ए सेल, एंड द कस्टमर इज सेइंग कि नहीं यार, मुझे ये नहीं, इसमें एक ये फीचर एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि वी आर ऑल टेक्नोक्रेट्स मोस्टली हेयर. तो टेक्नोलॉजी में मुझे एक ये फीचर एक्स्ट्रा चाहिए, या आप मुझे एक ये पैरामीटर का इवैल्यूएशन एक्स्ट्रा करके दीजिए. तो यू विल हैव टू टेक ए कॉल एंड यू विल हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. इन सर्कुलर आई हैव स्टार्टेड द सेम केस. इन सर्कुलर व्हाट विल हैपन इज, आप बोलेंगे उसको कि सर, ये हमारा स्कोप था, ये ही था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हम तो सिर्फ ये ही करके देंगे. तो दैट इज ए सर्कुलर थॉट प्रोसेस, क्योंकि जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं पे करेंगे. तो फॉर एग्जांपल, इफ यू विल फाइंड जर्मन्स मोस्टली आर कंप्लीटली सर्कुलर थिंकर्स. इसलिए आप वहाँ देखेंगे मशीनिंग, आर एंड डी, ऑल दो थिंग्स, दे दे आर वेरी वेरी गुड. ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सेल्स, ये सारा लीनियर उसके अंदर आता है. तो दैट्स व्हाई वी इंडियंस आर वेरी गुड इनटू इट, बिकॉज वी इंडियंस आर जनरली लीनियर थिंकर्स.
ओके, तो ये आपको जानना जरूरी है, और इसको आप कोरिलेट करके देखिएगा कि आप रोल चेंज कर रहे हैं। अगर आप रोल चेंज कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम सेल्स टू R&D, यू आर थिंकिंग ऑफ दैट, देन एंड यू आर ए लीनियर थिंकर, आई थिंक यू आर not doing the justice to yourself. So this is how I have planned it. So that was on thinking process. Now, organization compatibility. This is very interesting because this is one thing that we miss. एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है सेलर ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑर्गेनाइजेशन इज बायर ऑर्गेनाइजेशन. सो आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, probably people between below 30, they don't may not have experienced it yet, and most of the Indian companies don't have much of the buyer organization. So I will try to explain to you in short. um, if I am selling a product, I am making a product, I am selling it. Okay, means I am interacting with a with somebody who is buying. um, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है मेरा, चाहे बिकॉज आई हैव ए कस्टमर हु हैज गिवन मी द स्कोप, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई नीड टू डिलीवर दैट, सो आई एम वर्किंग एज ए सेलर. सो आई ऑलवेज कम इन टू द प्रॉफिट सेंटर ऑफ द कंपनी. ओके, क्योंकि मुझे बेचना है तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा. और अगर मैं नहीं करूंगा तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा इसके अंदर. दैट्स द सेलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, राइट. Buyer organization is where you are part of cost center, or the company is working as a acquiring products. Okay, for example, when I was at Nortel, I was selling equipments. I was part of the seller organization. When I was at the telco Verizon, I was buying those equipment, okay, and deploying, because then I was part of the cost center. Okay, because services are were given separately by some other part of the organization. Okay, similar example in Sterlite, I was selling fiber cable, some other equipment to all the telcos. In telcos, I was taking that and I was deploying. So it was part of my cost structure. Okay, services बाद में, that is completely again, when you go to the service part of the function, then it becomes part of the seller organization within the same organization, right? तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप मैंने जैसे स्टरलाइट और वराइजन रिलायंस का एग्जांपल दिया, या मैं नोटल या वराइजन का एग्जांपल दे रहा हूँ. इन दैट केस आई हैड ए कंप्लीट ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन. Okay, but in this case, you might have the role change within the same organization. Also, you might move from seller to buyer organization or buyer to seller organization. For example, in a telco environment, or even in a manufacturing environment, any manufacturing environment, you might be part of producing the product, okay, or and acquiring inputs for it. But there might be another organization that might be doing the sales. Right? So that is become seller organization. Do you have compatibility with it? No. Or yes, you need to check. मैं अपना बता देता हूँ. मैं एक फ्लोर पे बैठता था. आई वॉज पार्ट ऑफ R&D इन नोटल, एज आई मेंशन. हमारे फ्लोर के ऊपर ही एक बहुत गलत काम कर रखा था ऑर्गेनाइजेशन ने, कि उसी फ्लोर के ऊपर सेल्स वाले भी बैठते थे. तो ये सेल्स वालों का बड़ा लाइफस्टाइल बड़ा फ्लैशी होता था. दे विल बी वियरिंग जैकेट्स ऑल द टाइम, कोट्स एंड सूट्स, एंड दे विल बी फ्लाइंग ऑल द टाइम. बड़ी अच्छी वॉचेस, बड़े अच्छे बैग्स, और हम लोग देखते थे यार, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम बनाते हैं, मस्ती ये कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये करना चाहिए. 2 साल बाद, 3 साल बाद, आई मूव टू दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड एज ए हेड ऑफ दैट. सो इमेजिन माई ट्रैवल and how flashy I had to portray. But 2 साल के अंदर I gave up because I was not meant for it. I started failing in that particular role. ये नहीं था कि मैं I was excelling. I started to fail because I started avoiding a lot of things that were not uh, relating to me. For example, classic example was था कि आई एम ए हार्डकोर वेजिटेरियन. मैं सुषमा जी को बता रहा था, मैं इतने साल हो गए मुझे ट्रैवल करते हुए, मैंने और इंडिया में आके भी आज तक मैंने मैकडोनल्ड का कुछ नहीं खाया है. तो तो अब वो क्या है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जा रहे हो, उन लोगों के साथ आपको एंटरटेन भी करना है, बिकॉज यू आर इन सेलर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर होस्टिंग देम फॉर डिनर्स, यू विल हैव टू, एंड एवरीवन इज नॉन वेजिटेरियन. सो इट यूज्ड टू पिंच मी कि
मेरे सामने बैठ के कोई नॉन वेज खा रहा है, तो इट वाज नॉट सूटिंग माय कल्चरल माइंड सेट आल्सो। ओके, बट दिस इज फॉर मी, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, okay, when you are looking at which organization you are moving to. Then this one is aspiration is something where I mentioned that you need to be really honest when you are doing this evaluation. For example, मेरे दोस्त का बेटा अभी ही हैज ज्वाइंट एचपी, राइट? और मेरे एक दूसरे दोस्त का बेटा जो उसका क्लासमेट ही था, ही हैज नो टेक्निकल कैपेबिलिटीज, ओके, आर एन डी की तो है ही नहीं, एंड ही हैज ज्वाइंट आर एन डी एच पी में। ही इज चेजिंग मी कि अंकल वो एचपी में लगा है तो मुझे भी एचपी में आर एन डी में जाना है। ओके, आई आस्क हिम 10,000 टाइम्स कि क्यों जाना है। नहीं, एक तो वो है कि वो गया है, दूसरा मेरे को आर एन डी करना है, मेरे को कुछ बनाना है, but he doesn't have that real mindset or skill set to do that. It's an acquired aspiration because somebody else has done it. Okay. It's not a real aspiration, so need to be very careful and be honest to yourself. आप जो चेंज करना चाह रहे हो वो क्यों चेंज करना चाह रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, और whether it is going to fit into your mindset. Let's come to the next one, which is something very important. I feel most of the people just run over it. They don't even think about it. एक तो आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, what I have seen is specifically in India and even abroad, I have seen people have habit of giving excuses when they move from one organization to another organization and they are in hurry, कि मेरे को तो कोई भी सर घर में प्रॉब्लम हो गया, या मेरे को ये है, मेरा ये इशू है, वो इशू है करके, पीपल द मोमेंट दे हैव मेड अप देयर माइंड दैट दे आर गोइंग टू गो टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, दे लूज इंटरेस्ट इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज डोंट डू दैट। ओके, जो आप कर रहे हो जितने दिन भी, लास्ट मोमेंट तक जब भी आप काम करो वहाँ पे पूरे दिल से काम कीजिए, उससे निकलिए। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको ये जरूर याद रखना चाहिए। एंड एग्जाम्पल मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि ये करना चाहिए, बट वेयर वी फॉल्टर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, I got an opportunity with another organization. They said, okay, your joining will be 2 months down the road. But मेरी ऑर्गेनाइजेशन बोली कि यार तू इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इसमें 3 महीने लगेंगे, 1 महीने मैनेज कर ले। ओके, बट आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट ऑन डे वन, फॉरगेट अबाउट द गिविंग 3 मंथ्स। ओके, डोंट डू दैट, ओके, व्हेन यू आर मूविंग। ओके, तो आपको मैंने इसको इवैल्यूएशन में क्यों रखा है, क्योंकि जब भी आप कुछ चेंज करने की सोच रहे हैं, इसमें कुछ और भी हो सकता है। आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन माइट नॉट अलाउ गिव यू इनफ पेपर्स टू प्रोसेस योर, और क्लियरेंसेस टू प्रोसेस योर वीजा, that might be required if you are moving outside. तो just keep that के obligations आपके current organizations में क्या है, और what you need to do to make a very honorable and very professional exit, that you need to keep in mind, and you need to think about it also, that how you are going to handle it. Okay, then comes the social life. Social life में, see, I can have my parents living with me. अब मेरे यहाँ क्या है कि मंदिर जाना ही जाना है मम्मी को। तो अगर मम्मी को हर रोज मंदिर जाना ही है, और मैं यहाँ से डिसाइड कर लूँ कि मैं अभी मूव कर रहा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे कि जैन मंदिर तो छोड़िए, मंदिर ही नहीं है, उनके सिटी में ही नहीं है, तो इज दैट गोइंग टू बी ओके विद मी और नॉट ओके विद मी? वो ये सारी चीज़ें मैंने पेरेंट्स का एक एग्जांपल दिया, बट इट कैन बी फॉर योर किड्स आल्सो, इट कैन बी फॉर योर ओन लाइफ आल्सो। हस्बैंड वाइफ बोथ माइट बी वर्किंग, एक का फ्रेंड सर्कल है, एक दूसरे का फ्रेंड सर्कल है, आर यू गोइंग टू टेक दैट डिसीजन टू jeopardize that whole setup, right? एंड फाइनेंशियल में आपका, एवरीवन नोज, दिस इज़ वेरी इजी, इजी इजी टू अंडरस्टैंड। आपकी ईएमआईज चल रही हैं, और ओब्लिगेशंस हैं फाइनेंशियल, जहाँ पे आपने किसी को कमिट कर रखा है कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग। आप अपना घर बनवा रहे हैं, आप अपने फ्लैट बना रहे हैं, या आप कुछ भी जो भी कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल उसके अंदर क्या है।
अब आप बोलेंगे इसको ये रोल, ऑर्गेनाइजेशन, स्किल और ज्योग्राफी में कैसे फिट होता है? दिस ऑल थिंग व्हेन यू विल स्टार्ट इवेल्युएटिंग ऑल दिस थिंग्स, देन यू विल think, you will say, okay, taking this new role or taking going to this organization, और स्किल के अंदर इसमें क्या होगा कि स्किल का बड़ा इंटरेस्टिंग सा है मेरे पास एग्जांपल। आप लोग तो मोस्टली इस कॉल के ऊपर यंग लोग हैं, मगर एक सॉफ्टवेयर आया था बीच में, ईआरपी, और उससे पहले भी, ओके, आप सबको पता होगा। तो सब लोगों ने क्या किया, इंजीनियरिंग छोड़ छोड़ के उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, ओके, विदाउट थिंकिंग के इसका, क्योंकि आज तो मुझे अच्छा लग रहा है आज पैसे आ रहे हैं, मगर आफ्टर 6 years, 10 years, what will happen when I will be less employable because of my age factor, when I will be less mobile because of my family, commitments, then at that time what will happen? Not many people thought about it, ओके। एंड नाउ मैं बता सकता हूँ, 8 ऑफ माई क्लासमेट्स, दे मूव्ड टू यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, and they forgot about the hardcore engineering and they started working on this software and all those things. Oracle का था और एक और कंपनी का था। तो they started working on those and now they are unemployable. They're just sitting, and 3 of them are on social security benefits already. So do you want to end up in that situation? That also you need to understand very clearly. Okay. So Vijay, just there's a question, and it's very interesting that you're talking about it. Amol is also asking a question, and I think it's like he says, with the ongoing technology, business disruption, there are industries, roles which will not be on the decline. Exactly the point that you just mentioned. जी So the question is of survival. So what are the signals, early, midway, or certain, what should one watch out for to anticipate this industry decline or transformation? Could you share a little bit on that, please? Yes, 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 absolutely, absolutely. So what happens is, I was going to come on to that same point in the next slide. If you see short term, long, Yes. okay. So basically, the point is, let me answer that question. I don't call it a part of sustainability. Okay, I Mm. call it part of growth. आप उसको, आर यू एबल टू एंटिसिपेट व्हाट इज कमिंग इन फ्यूचर एंड हाउ यू शुड बी एबल टू नेविगेट दैट, राइट? आज के टाइम में सब लोग बोल रहे हैं, आई सी लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, सो मैनी कंपनीज हैव कम अप दैट एआई, यू नीड टू लर्न अबाउट एआई, यू नीड टू डू अबाउट, it will take away your jobs and all those things if you don't upgrade your skills. See, when you talk about upgrading skills and what is coming next, that you should be prepared for any role that you are doing. It's not about whether you are planning to change. Okay, आप घर में भी डे टू डे लाइफ के अंदर भी यू कीप ऑन प्लानिंग के नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो यू आर डूइंग प्लानिंग फॉर दैट। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आप घर में आपके जो भी एक प्रॉब्लम आने वाली होती है, यू आर एबल टू एंटिसिपेट इट, व्हाई, एंड व्हाई यू आर अनएबल टू डू इट एट वर्क प्लेस। ओके, आई टेल यू द रीजन। द रीजन इज because in your DNA is mixed up in your house, okay, in your household thing, and you are not mixed up in your industry that way, same way. Okay, that was it, because then you are not able to predict anything. Now, skill development you will have to do continuously, answering it in very professional way, not philosophical way. Uh, you will have to continue to learn your skills every day. You cannot, skip that. Anticipating means you need to join many groups where you need to interact with people. There is no other way you will get to know what is happening next. Okay. Um, I get an opportunity to meet anyone, I will go and meet immediately. Okay. Because somebody has some idea. अब आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर आपकी नेटवर्किंग जो आपने करके रखी है, उन नेटवर्किंग के अंदर जस्ट मेक श्योर दैट यू नो एटलीस्ट
5 people who are 2 levels above you. Okay, I am giving you rule of thumb. Okay, कि आपको कैसे पता चलेगा? Because they have anticipated more, they are in more touch with their clients or with the industry as you are. So make sure that you have at least 5 people who are 2 levels above in your domain who can tell you exactly what is coming. Okay, that is one part. Second part is, once you know what is coming, then you need to see whether you are even willing to do that or not. For example, I have said no to AI completely. Okay, I have made a decision. I will do manually the way automation happens. I will not subscribe to AI. Okay. Similarly, you can say that I am not going to do this. And at that is the point where you look at all these parameters and say whether I am ready to make a change to any other organization or other role. So better is you change the role, okay, then if you are not willing to acquire the new skill. Okay, I hope I didn't confuse you. The point I'm trying to say is, अपने लेवल से 2 लेवल अबव से आप कम्युनिकेशन रखें, उनसे समझें क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आपको स्किल सेट पता चलेगा, आप उसके हिसाब से कीजिए। अब इसके अंदर एक और कंपोनेंट है कि मैंने ये भी बताया आपको कि यू विल, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वो स्किल आ ही सके। तो अगर नहीं आ सकती तो लुक फॉर अदर रोल्स वेयर इट कैन बी। ओके, इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है वो है फाइनेंशियल पार्ट। व्हेन स्किल्स इंक्रीज, ओके, व्हेन द अपग्रेड ऑफ स्किल हैपेंस, it brings a lot of, and if you are before time, then you can make a kill in that area as well. So need to keep that positive thing in also mind. Third thing, I can give you a tip what I do. Okay, आप इंडस्ट्री के अंदर, आपको ये तो मैंने बताया कि 2 लेवल अबव एक कोई होना चाहिए आपका जो कि आपको बता सकें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चला। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लुक एट वेयर द मनी इज फ्लोइंग, एंड स्पेसिफिकली फॉर 30 years प्लस एंड बिजनेस में जो है वो उनके लिए है ये, कि लुक एट वेयर द मनी इज फ्लोइंग। सो फॉर एग्जाम्पल, इन कैलिफोर्निया 20 years ago एवरीथिंग वाज मूविंग टू टेलीकॉम। उससे पहले सॉफ्टवेयर, फिर टेलीकॉम, फिर उसके बाद आया ईवीज के अंदर, एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर। आज के टाइम में बूम कहाँ पे है? एआई में। तो ऑफ कोर्स एआई इज द नेक्स्ट मेजर थिंग टू हैपन। ओके, तो वो भी आपको ट्रेंड्स दिखाएंगे। अब आप बोलेंगे कि मेरी ये जॉब है और मैं इस जॉब के अंदर मैं क्या देखूं, दैट आई विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द पाथवे दैट आप अपने सीनियर से जो सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्ट हैं 2 लेवल अबव, उनसे बात कीजिए तो दे विल टेल यू व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। लुक एट द ट्रेंड वेयर द मैक्सिमम मनी इज गेटिंग इन्वेस्टेड, दैट दोज आर द सेक्टर्स टू हैपन। और वो सेक्टर्स, ये मैं ग्रोथ पे आ गया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में यहीं पे एड्रेस कर देता हूँ उसको। तो उसके अंदर क्या है कि जब आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी सेगमेंट के अंदर, राइट, तो जनरली इफ, एंड आई एम एन इन्वेस्टर नाउ, सो व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग, आई एम मेकिंग श्योर दैट आई विल गेट ए गुड एग्जिट आफ्टर 5 years or 10 years, right, from the investment I have made. So keeping that in mind, I know that this sector is going to survive at least 15-20 years. ओके, तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हो कि 15-20 ईयर्स का होराइजन जरूर लेके चलें आप उसके अंदर के। वाई आई एम नॉट इन एआई, बिकॉज आई थिंक इट्स इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, टू अर्ली फॉर मी टू गेट इनटू इट। आई विल गेट इनटू एआई आफ्टर 5 years व्हेन एवरीथिंग इज सेटल्ड। ओके, so sometimes you make that kind of a choice कि यार होने दो अभी, ये जब नॉर्मल हो जाएगा देन आई विल गेट इनटू टेक्नोलॉजी। But if I get into that technology today, I will be paid probably 10 times more than other people will get paid, right? So this is what you need to keep in mind, that it's a short term. अभी क्या रहता है कि, and specifically, the audience below 30, मेरा सजेशन है, जॉब्स बहुत ज़्यादा स्विच मत करें। ओके, एक अपने डोमेन की एक्सपर्टीज बनाएं, आप अपने एक डोमेन में अपना नाम बनाएं। The moment people will start relating your name to a skill, okay, you have achieved everything in that particular professional life, that I can tell you. That's all you need to create. तो आप इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहेंगे, थोड़ा सा
सैलरी के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बाकी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बट एट द एंड यू विल एंड अप लूजिंग ए लॉट. Okay. So that was on the growth side. I think some more questions have come. You wanted to say something, Shishma ji? I think this is good. There have been, there's a question on that growth itself. It's come from Ritu, and she says, "What's your take on short-term trade-offs? What are some of the trade-offs during your career transitions when we go from one side to the other?" Kabhi, जी. I think जी, I'll तो let you उसके answer अंदर, that one. जी, सो सो अंडरस्टैंडिंग रिस्क के अंदर आपका वो ही है सब कुछ जो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन. इसके अंदर सोशल में मैंने आपको कल्चर बताया कि आप यहाँ से चले जाइए, आप किसी और कंट्री के अंदर, वहाँ पे आपका कल्चर ही सेट नहीं होता. सिर्फ ये मैं एक ज्योग्राफी का एग्जांपल दे रहा हूँ. उसके अंदर आपका कल्चर, आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम लोग यूएस के अंदर, तो मैं 8 घंटे, सुबह 7:30 बजे ऑफिस पहुंचा, 4:30 बजे घर, राइट. यहाँ पे मैं 9 बजे पहुंचता था, तो भी कोई, फर्स्ट डे आई रीच्ड फॉर माय ज्वाइनिंग, यू विल लाफ एट इट. मैं पहुंच गया, वहां से आया था, मेरे को आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज 17 जून. आई आई केम एंड दे सेड कि सर आपकी सुबह ज्वाइनिंग होगी, आप आ जाइए. मैं सुबह सुबह पहुंच गया 8 बजे, वही दिमाग के अंदर माइंडसेट, बिकॉज आई हैड नेवर वर्कड इन इंडिया बिफोर दैट. ओके, तो 8 बजे मैं पहुंच गया. वहां तो कोई था ही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड था खाली. मैं बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा. मेरे को लगा 9 बजे आ जाएंगे, 10 बजे आ जाएंगे. 10:30 बजे, 11 बजे लोगों ने आना शुरू किया. तो मेरी ज्वाइनिंग वाज, और फिर ज्वाइनिंग करके मेरे पेपर वेपर हो गए. फिर मैं बैठा हूँ कि अच्छा ठीक है, मेरा फ़ोन उनको देना था, लैपटॉप देना था. बैठा हूँ. फिर शाम को 5 बजे मुकेश भाई आते हैं, अपने हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं, कहते हैं विजय कहाँ है. अच्छा, वो विजय को ढूंढ रहे हैं आप सब. फिर विजय जाता है, फिर उसके बाद फिर जाके मिलता है वहाँ पे, तो फिर वो इंट्रोडक्शन होती है. तो दिस इज हाउ इट हैपेंड. इट विल नेवर हैपन लाइक दिस इन यूएस. इफ आई हैव टू हायर somebody, somebody will be, you know uh, uh, will be present there. He will tell you, or she Yes. will tell you what time you need to come and all those things. So मैं एक कल्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एंजॉयड दिस कल्चर आल्सो. इट वाज वेरी गुड. आई कुड स्लीप फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो सो हर एक कल्चर का अपना वो है. तो आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का भी है. एक एक मैं इंडिया के लिए बताता हूँ कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट चलती है, लाला कल्चर. आई एम, इट माइट बी कंट्रोवर्शियल एंड इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड, बट आई डोंट माइंड. कि लाला कल्चर बहुत है कि मैं तो लाला जी को जानता हूँ. आप कुछ भी काम कराओगे, बोलेगे मैं तो लाला जी को जानता हूँ. आप बोलोगे कि यार मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, मैंने इतना काम किया, मैंने सब बनाया, फिर एक कोई आएगा और बोलेगा कि यार ये बेकार है. तो बिना पूछे, और आप बोलोगे कि यार ये तो मैंने बहुत मेहनत की थी, क्यों बेकार है. मैं लाला जी का आदमी हूँ, मैंने बोल दिया खराब है तो खराब है, राइट. आर यू एबल टू टेक दैट कल्चर वर्सेस कल्चर जहाँ पे आपने एक प्रपोजल दी, उस प्रपोजल के ऊपर पूरा डिबेट होगा, एंड दे विल गिव यू इनपुट्स फॉर अमेंडिंग इट, राइट, एंड सो ऑन. तो एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट कैन बी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी जियोग्राफिकल. वो कल्चर जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, दैट आल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड. टीसीएस माइट हैव ए completely different work culture as compared to Infosys. Okay. And Infosys might have completely, I can tell you about between Wipro and TCS, huge difference. And Yes. both the organizations are across road on Sarjapur Road. Okay. So people move from TCS to Wipro, Wipro to TCS, they will see a huge difference in culture. So you need to keep that in mind. And then lifestyle is also important. इसके अंदर क्विकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम में ये लोग बाग सोचते नहीं है इस चीज़ के बारे में. Until 15 Senyogji is there, he might, second it. Until 5, 10 years ago, 10 years ago, if I was moving from say, I moved from my Verizon job in US and I decided to move to India, right? Then it was mandatory that if I was living there in 6 bedroom house, then company will provide me 6 bedroom house here. Expats were treated that way. If I was driving a BMW there, then BMW has to be given here. उसका रीजन क्या था? What they wanted to do is they didn't want to disturb your social life, because you are already getting disturbed on your professional life. You are not supposed to get disturbed on your social life with your lifestyle specifically. ओके, तो अभी आज के टाइम में बंद हो गया, बट इट इज अ वेरी प्रूवन फैक्ट एंड इट वाज इन फैक्ट फॉर मोर देन 50 years. एंड आज के टाइम में भी अगर जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे स्टिल डू इट.
ओके, दे स्टिल मेक श्योर दैट इफ यू आर गोइंग, यहाँ से भी अगर आप बाहर जा रहे हो तो योर लाइफ स्टाइल इज मैच्ड. सो दैट इज द रिस्क यू नीड टू कीप इन माइंड. फाइनेंशियल, एवरीवन नोज यू नीड टू हैव ए फॉल बैक प्लान. कि अगर मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास होना चाहिए कुछ सैलरी, कुछ डिपॉजिट्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अभी ईएमआई भी कैसे देनी है, क्या नहीं देनी. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी. Sustainability means it's again same thing, like if you are say you are out of job, and this financial sustainability section applies for people who are thinking they want to start a new company, a startup they want to do. Okay, तो आप 100 रुपये जेब में रख के आप एक स्टार्टअप करने जा रहे हो, और फिर 100 रुपये तो खत्म हो गए 6 महीने में, अब क्या करें. तो पता चल रहा है कि घर के अंदर खाने के भी पैसे नहीं है पॉकेट में. दैट शुड नॉट बी द केस. सो मेक ए बेस लाइन वेयर you have enough income coming to sustain the lifestyle, sustain the family, and above that, whatever you want to do, then take the call of doing a startup. Okay, or any other venture. So industry and global environment is, this is another, this basically talks about what you ask, skill set. अगर एआई का आ रहा है तो मुझे क्या करना होगा, राइट. Whether I need to grow, how I mitigate those risks, right. So इसके अंदर क्या है कि आप एक तो हाउ लॉन्ग इंडस्ट्री के अंदर ये कितने ड्यूरेशन का है, विच आई मेंशन लाइक 20 years इज द लाइफ स्पैन आई जनरली सी. इसको दूसरे ढंग से आप सोच के देखिए, एंड इट्स वेरी सिक्लिकल. द होल वर्ल्ड इज वेरी सिक्लिकल. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ओके, cigarette was a style. There used to be advertisements all across for cigarette. Movie stars will be smoking cigarette and all those things. 25 years later, you shouldn't be smoking. It's bad for health and so on, right? वो cycle खत्म हो गया. Same thing is McDonald's was promoted like left, right, and center junk food in US. इवन इन स्कूल का जो डेली लंच मिलता था, उसके अंदर भी जंक फूड मिलता था सब. 25 साल बाद वो शुरू हो गया कि अभी इसको तो नहीं, ये तो बेकार है, इसको तो खाना नहीं है, अभी तो यू शुड ईट हेल्दी फूड एंड दिस एंड दैट. तो हर एक प्रोडक्ट का जो साइकिल है वो 25 years है. 25 से 40 years तक चलता है. ओके, तो आपको एग्जांपल और भी दे सकता हूँ मैं. हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे, उनका लाइफ साइकिल देख लीजिए आप, 25 साल था, 25 से 30 साल. अभी आप लैपटॉप का जो साइकिल देख रहे हो, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी ओवर, बिकॉज इवेंचुअली टैब विल बी सो पावरफुल and phones are already powerful, okay, that this will be over. So technologically also, when a new product comes, the technology keeps on evolving, and so is our behavior and our environment also. एनवायरनमेंट के अंदर मैं एग्जांपल आपको घर में भी आपको बता सकता हूँ कि 20-25 साल के अंदर, हमारे 25 साल के अंदर हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, हमें लगने लगता है कि इसको रेनोवेट करके नया करना पड़ेगा, राइट. यू वांट टू मेक ए चेंज. इट्स नॉट ओनली बिकॉज इट हैज डिकेड, बिकॉज इट हैज लिव्ड इट्स लाइफ. That's the point I'm trying to communicate. It has lived its life. The product also has a product life cycle, and that's what they teach you first, that this is the product. When you go to product management, that this is the product and this is the life cycle of the product, right? Many of you must have heard. तो अभी उसके अंदर स्किल के अंदर भी यही है कि कौन सा स्किल आपका है, उसका भी एक लाइफ साइकिल है. Java was so famous, but it stayed only for 10 years or 15 years. आपका सी प्लस प्लस, सब लोग सी प्लस प्लस ही करते थे. ओके, उसका एक लाइफ साइकिल था. ईआरपी सिस्टम्स लोगों ने करने शुरू किए, उसका एक लाइफ साइकिल था. तो सॉफ्टवेयर साइड में भी लाइफ साइकिल है. आप देखिए मेन जो डेवलपमेंट हुआ है, दिस इज क्लासिक. शुरू हुआ था इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट या इंडिया में सर्विस इंडस्ट्री अराउंड 1999. वाई टू के प्रॉब्लम को लेके मेन शुरू हुआ था, राइट. 2025 वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी कोडर्स की जरूरत नहीं है, एआई विल डू इट. हाउ मेनी ईयर्स? एग्जैक्टली 25 years.
ओके। सो ये आप उसको दिमाग में रखिए कि कितने ड्यूरेशन का है आपका वो जो प्रोडक्ट है, वेदर इट्स स्किल इज न्यू देन इट विल स्टे देयर फॉर 10 15 20 years। उसके अंदर भी कुछ स्किल्स हैं, आई गिव एग्जांपल जावा स्टेड फॉर 8 10 years एंड इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, मीन्स इन दैट डिमांड, right? But others stayed for longer period of time, so that you need to understand. Then SWOT, इसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर की बात की है, मैं हार्डवेयर की भी बात करता हूँ इसके अंदर। कार्स का जो है इंडिया के अंदर जो रेवोल्यूशन आया है कार्स का, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात कर रहा हूँ। 2000 के बाद ही लोगों ने गाड़ियां ज़्यादा खरीदनी शुरू करी। अब 2025 तक आते आते सब लोग डीजल पेट्रोल भूल के अब ईवी की बात करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो वो भी 25 से 40 साल का साइकिल है बाहर। इन यूएस इट टुक लॉन्गर बिकॉज इट हैज नॉट गोट ऑप्टिमाइज्ड टिल 90s, लेट 90s। प्रोडक्ट का भी वैसे ही है। तो और एक आपको याद है हम लोग म्यूजिक जब सीखते थे बचपन में बजाते थे तो एक सिंथेसाइजर आता था, उसको कैसियो बोलते थे, Right. right? Okay, Casio has disappeared. It is now with DJs, people only, right? Yeah. You can play everything on your phone now, right? So product cycle उसका आपको SWOT करना जरूरी है। कि आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस बिकॉज दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस दैट यू हैड आस्क्ड आर गोइंग टू गेट आंसर्ड। और आपको उसका SWOT कीजिए पूरा, एंड दैट्स वेयर यू विल नीड टू लेवल सीनियर पर्सन विद यू हु कैन डू एंड टेल कि इस इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या हैं आगे, फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी एंड ट्रांजिशन, दिस इज द क्रिटिकल वन। आपने ज्वाइन कर लिया किसी को, आपने मैंने सोचा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहा हूँ, आई वांट टू गो टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई विल बी डूइंग दिस, एंड देन you are stuck there and you are now 45 and you are thinking where should I go? Mm. सो यू शुड मेक श्योर दैट आपके पास एक स्किल सेट ऐसा रहना चाहिए, आपके इंडस्ट्री में एक में ऐसे जाना चाहिए जिसके अंदर यू आर एबल टू मूव टू इधर योर प्रीवियस इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री फ्रीली एंड वेरी easily. Okay. Global factors, politics, I'm talking about H1B visa is a classic example, right? So people are thinking I will get it or not get it. People who are studying there, whether I will get 2 years working permit or not. And people who are already there, they are thinking, should I sell my home and get back, right? So this is a global factor you all need to keep in mind. And there are, interestingly, earlier people never used to know about geopolitics, but nowadays, because of social media and other things, information is available. And I strongly recommend that people should start reading or listening podcasts about geopolitics because it is going to decide exactly how things are going to move. Classic example in the economic section when I'm talking about is gold, Yeah. right? And in Mhm. dollars, right? Me and my wife, we sit nowadays and we just say that if I had not transferred all my US dollars when I moved to India into Indian rupees, I would have made more money than investing in two different things. Because at that time it was 50 rupees, conversion rate. Now it's 88 rupees, right? But because I didn't understand the economy, global economy, how it is going to work, right? And stability, and you need to go into regions which are stable. For example, in Afghanistan nowadays, politics is very stable. They can pay you good money, economy. They are actually, they have more powerful currency than Indian rupees today. Okay, Afghanistan. Okay, and you have politics, economy, everything is there. But will you go to Afghanistan to work? No, right? The stability is missing. So globally, I give the same example. Afghanistan is a prison, but if you look at Germany is same. Okay, today, and UK is same in the same category. So those are the other factors you need to keep in mind. And within India also, um, for me, I cannot go to certain part of a country and live there, okay, or take an opportunity. Reason being, uh, I don't find it very, stable. Okay, I don't find it stable in the sense either, political
चल रहती है, या your corruption is more, or other factors are there. So all those things you need to keep in mind while making the decisions. So that's all I wanted to tell. I have taken much more time than it was Oh, planned to be. So that's all, and thank you very much for thank you. listening to me. So, Vijayji, that has been such a lovely list. I mean, you just put all these factors that we need to consider into a nice checklist for us, literally. So, just with your permission, for the people who are attending today, would you be okay if we share the slides? I'm sure people would have been clicking and taking screenshots and Please making share. their notes. No, please share. Please share. It's for everyone's consumption, and people can, if they have they should. I suggest that they should keep on modifying this to add more parameters, and keep on circulating amongst themselves, so that everyone can get benefited. Mm. So, Ajay, can I request you to just share that for anyone who has not taken it? Sure, Yeah, sure. I will share. right. Yeah, in the chat box we can share. So, Vijayji, I have some questions for you, right? I mean, it's such a fantastic journey. You've shared so much, and you've shared a lot of how, right? What to be done. Now, I would like to, not the how, I mean, you said a lot of what to be done. From your own personal experience, I would like to ask you, see, we don't, मतलब हम लोग ये सब knowledge के साथ पैदा तो होते नहीं हैं. There are people along our journey, there are experiences that we have which are huge learning experiences. And would love to know from you, as you were learning and you're going through this journey, were there somebody, you also said, not connect with people 2 levels up, 3 levels up, even in different industries and, network and professional organizations. Somebody or some incident that comes to your mind, which you thought, Arey, fantastic that this person gave me this type of guidance. जी, तो मैं आपको दो इंसिडेंट्स बताऊंगा अपनी लाइफ की. Mm. सो क्या हुआ कि व्हेन आई डिड माय इंजीनियरिंग, I thought that in 93 I did, and I thought that this is it. अभी जॉब पे लग जाएंगे, शादी वादी हो जाएगी, सेटल हो जाएंगे, छोटे शहर के लड़के जैसे रहता है, एस्पिरेशंस ज़्यादा नहीं रहते हैं. तो वन नाइट आई डिड वर्क एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर फॉर 3-4 months. तो आई वॉज गोइंग इन टू द प्लांट. उस समय बड़े बड़े प्लांट होते हैं. 93 सॉफ्टवेयर वॉज नॉट देयर. तो आई वॉज द ऑन द नाइट ड्यूटी फॉर द मेंटेनेंस, एंड हमारे ऊपर क्रेन होती थी, होस जो ऊपर शेड में चलती है. तो दैट इज अबाउट लाइक 20 meters हाई. Mm. तो वो कहीं जाके बीच में अटक गई. तो मैंने वहां पे जाके उस बंदे को, जो टेक्नीशियन था, उसको बोला. मैंने कहा भाई ऊपर चढ़, वहां जाके ये मेजर कर. बोला सर आप तो बड़े साहब हो, आप तो इंजीनियर हो, आपने आके बोल दिया. मैं तो ऊपर चढ़ूंगा, गिर के मैं मर गया तो क्या हो गया. तो रात के 3 बजे थे. मैंने बोला भाई तू भी पढ़ लेता. ओके. तो बोले सर मैं 12th पास हूँ, और मैंने वो ITI का किया है कोर्स. मैं बोला यार अभी पढ़ ले, तेरी उम्र तो कुछ लग नहीं रही. तो उसने बोला कि सर उम्र निकल जाती है एक बार, तो फिर नहीं दोबारा पढ़ सकते. तो कन्वर्सेशन ओवर, वी डिड द थिंग, आई केम बैक, एंड व्हेन आई वाज कमिंग बैक, थिंग kept on ringing in my mind that एक बार उम्र निकल जाएगी तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे. तो that message is still there in my mind, and that has taught me the meaning of time. That everything, if you are not going to do it on time, then how you can lose on so many things. Okay, I cannot think of doing a PhD today, right? So example, why I gave this example, that we have learnings all across all the time. Okay, only thing is, are we willing to listen to them? Okay, so there is so immediately after that I prepared for GATE and I went for masters. Okay. So example I'm giving, and that opened up the gateway for me to go to Canada and all those things. Now हमारे यहाँ ना हिंदी में बड़े अच्छे शब्द हैं, उनका इंग्लिश में भी है. तो मैं उसको एक दो एग्जांपल लेना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ यहाँ पे. हमारे यहाँ एक सुनना एक समझना, ठीक है. Mm. इंग्लिश में भी है हियर एंड लिसन. Listen. ओके. Mm. सो हम समझते हैं
और लिसन करते हैं, या हम सुनते हैं और हियर करते हैं. ओके, दैट्स वन पार्ट. सेकंड थिंग इज, आई वाज इन टेक्नोलॉजी साइड, completely technology side. I was in doing R&D. I was filing patents after patents, and Mm, I still have 28. So I was filing patents after patents, and so my boss tells me, Vijay, we went on dinner and lunches and all this in interaction. You are not meant for R&D. And I kept on telling him, I am filing patents, and you are telling me I'm not meant for R&D. And I was scared that if mm, he's telling me I'm not meant for R&D, does he want me to move out of this his organization? mm, तो उसके बाद उसने मुझे समझाया कि मुझे देखो, तुम जो बनाते हो प्रोडक्ट या जो भी R&D कर रहे हो, यू आर मेकिंग इट अप्लाइड. इट विल बी यूज इन फील्ड टुडे. इट इज नॉट मेंट फॉर जस्ट रिसर्च पर्पस. ओके. तो आप वो जो चीज़ करते हो, इसलिए आपको जाना चाहिए बिजनेस में. ओके. यू शुड गो ऑन द बिजनेस साइड, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर from your customer also what their needs are, and then you can design and you can have a team to design it. Okay. So technical marketing, that's the first thing that we started in 1999 in Nortel first time, and I headed that. तो वहां से मेरा क्या हुआ, बिजनेस की साइड में मैं मूव कर गया. और एक चीज तो, आपको कई बार लोग मिलते हैं जहाँ पे इंसिडेंट्स सामने होता है आपके सॉल्यूशन, बट इट हैज टू बी सीन. दैट्स ऑल आई विल से. सो स्टार्ट listening, not hearing. That's what I will say. Thank you so much, and thank you for all these wonderful tips. And this really gives me how we can learn from anyone, anytime. When you said that ITI person, that he made a statement. Are you really listening? Are you listening to the deeper things? And I'm sure, this whole program is all about mentorship and getting ideas and guidance. So even that, whether it's 2 levels up, 3 levels up, how do you really keep in connect with this? Now, most places it's very difficult. However, belonging to the JITO community, it is so easy for us. We are really, really blessed. We have some fantastic mentors, some of whom are already attending the session today. For example, Love Jain is here. I know Amit Jain is here. Vishal ji has joined us. Vishal Jain. I'm not sure if there's anyone else. I mean, you see Amol, and Ajay is part of the volunteer team. Ritu was part of the volunteer team. So many. And I think Varun Jain is here, right? So please do come on camera and Sayog. How do we really capitalize and keep growing together? You want to share some things on that? Yes, Sushma ji, and I would like to quickly share how participants can actually join the JPF mentorship program. First and foremost, thank you, Vijay ji, and we always, when we share information about these programs, we say that you are not going to listen to Gyan, you're going to listen to practical ideas and stories. And that's what we've been hearing from you. Thanks once again. And for all your experience, first-hand experience that you have shared with us. So Sushmaji, let me give a quick introduction of JPF and JPF's mentorship program. We are part of JITO, and Would you like to just go into full screen mode, I'm in slideshow mode? I am in full screen mode, but I'm No, trying. it's not in full screen mode. One second. नीचे वो है, you can press that, or in the view you can go into slideshow. Um, We are seeing all the slides and everything else. what are you It's seeing not now? it's not in slideshow mode. What are you seeing now? Not yet. What about now? Not yet. I'll try once again. Yeah, sure. Yeah, perfect. Okay. So JPF mentorship program is part of JITO, which is Jain International Trade Organization.
It is a very unique and a huge multi-stakeholder community of visionary Jain industrialists and business people, and they came together with a commitment to shape the future of the community and society at large. There are many verticals, of which are part of JITO. As a matter of fact, my slide is showing about 14, but now there are more than 18 verticals. And one of the verticals is called, JPF, and JPF mentorship program is part of JPF program. Now, there are many, by the way, our tagline is where experience meets curiosity. And experience of our mentors, we have more than 65 plus mentors, several of them, as Sushma ji said, they are on this call right now. And we also have 500 plus members on our community, JPF community group. And there are many, our vision really is to build a global platform where Jain professionals can engage with accomplished Jain professionals, and they are our JPF mentors. And our goal is to create avenues that will allow Jain professionals across different sectors to connect with our mentors. And our vision really is that more than 1 lakh Jain professionals should be able to take advantage of what we do. Let me share with you some of the benefits that our community members they get. First and foremost, they get a chance to attend our monthly level up series, get real stories, practical ideas. We also conduct small group mentoring sessions. From our mentors, you can get one-on-one mentoring from our industry leaders. Within the group of this 500 plus members that we have, you connect, you learn, you share and grow with like-minded community members on our WhatsApp and LinkedIn group. Our content, this is our 19th level up series, and all our content is available on YouTube on demand. And I had also shared that in the chat as to how you can access that. You can join us from anywhere in the world, and there is no cost to the community members. So there are really very big 7 benefits that you get when you become part of the JPF level of community. The profile of our mentors is available in our coffee table book. And by the way, the entire coffee table, the profile of each and every one of our mentors can be accessed through our level up group. I've also pasted the link to that for you. And when it comes to mentorship, there are so many different areas. I think there is no area which remains untouched, from finance to legal to energy, environment, sustainability, entrepreneurship, innovation, technology. You can get mentorship from our mentors in any of these areas and much more. We try to select sectors, and it was kind of very difficult because there are so many sectors in which you can get mentorship. So just to highlight some of them, financial services and financial technology, and you can look under them how many different sectors available: consulting and management, technology, software, media, and education, consumer goods, manufacturing, infrastructure, government, environment and policy, and real estate, pharmaceutical, sales, marketing, you just name it. There are hundreds of different sectors. So no sector really remains untouched. So if you wanted to speak to somebody from that particular sector, we have actually a mentor who can guide you. How do you join us? There are so many different ways, and you can access what we do. You can join our WhatsApp group. You can also seek one-on-one mentoring from us, and especially if you're from the community, you can access our old playlist of our small group mentoring sessions, our level up series. You can look at our mentor profile, which is available in our coffee table book. We are really powered by community spirit. These are all our volunteers. Some of them are on the call right now, and they are the ones who help. And behind this volunteer team, we also have our core team. Vishal ji, he is on the call. He is the convener, and of course, Sushma ji, she's anchoring, and Amol is there.
And Rutika Saban, she's in the JITO Apex Secretariat and she helps us out. Kumar Palji is the JPF chairman. Manish Jain, he's the JPF director in charge. We just finished our national conclave, the first of its kind, and it was a very successful conclave which was held in Hyderabad. So here are, this is just in a nutshell how you can take advantage of the JPF mentorship program. Over to you, Sushma-ji. Yeah, thank you so much for that. And I'm sure those who would like to, all the links are in the chat box. So feel free to click on them, join us, more than welcome. And now I think we should go back to what are the type of questions you would like to have and what type of discussions would you like to have with Vijayji or any of the other mentors too? So Vijayji, of course, please come back. Thank you so much. And Ajay, I can see that you've raised your hand and been waiting very patiently. So go Yeah, ahead, Ajay, please unmute yourself. yeah, thank you, Sri. So, Vijayji, as thank you for the enriching session. So, I have, as you said, so I have a doubt. Like you said, you should build a specialty in one of the particular domain and leverage it in the long run. So, I have a different view as I listening from the people as well. So, you should be being a journalist in spite of a specialist. So, what your views? Like, I'm in the early career, so it's almost post MBA, it's almost 3.5 years. I'm into banking, so if I want to diversify my portfolio, or if I want to go ahead, so being a specialist will be the good to go way, or it could be the journalist, as everybody is talking about. Journalist is the more go to game in the long run. So, Okay. So there are two, three aspects to it. One is, do you want to move to management? If you want to, you can answer yeah, to me. If you yes, want to move yes, to management, then you need to know many yes, domains, and your expertise domain will be management then. yeah. I Right? want Okay. to move in. Yeah. So management, how you are going to do the management, for that you need to make a skill set. Uh, Second thing I want to say it, यार हम लोगों का ना वही सब चीजें ना अवेलेबल हैं, हम देखते नहीं है. बहुत लोगों ने कहा है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. इज दैट गुड? Correct, इज दैट यू वांट टू बी? नो. अगर आप मैनेजमेंट ही करना है आपको, यू आर थिंकिंग दैट टुडे यू आर डूइंग सर्टेन स्किल्स एंड देन यू आर गोइंग टू गो इनटू मैनेजमेंट रोल, राइट? Then of Hamji. course you need to know all these layers also, but managing all these things also is a skill set where you will have to have mastery. You will remember, even in your career you will remember some managers who are very good. Even companies Correct, remember some people who are very good, and some people are not good. तो जैसे मेरी टैगलाइन जो मेरे को मेरे सर्कल में जानते हैं, वो बोलते हैं ये डोमिनोज का पिज्जा डिलीवरी वाला है. ओके, यू विल फाइंड इट, आई फाइंड इट इनिशियली आई यूज्ड टू गेट ऑफेंडेड, यार मुझे पिज्जा डिलीवरी वाला क्यों बोल रहे हो? बोले बिकॉज यू, इफ यू विल प्रॉमिस इन 30 मिनट्स, यू विल डिलीवर इट इन 30 मिनट्स. ओके, कि अगर आपने प्रॉमिस किया है कि आप ये करोगे तो आप करोगे. correct, तो मेरे Hamji. को बोलते थे ऑफिस में आते ही, आ गया पिज्जा वाला. ओके, तो दैट इज a skill set, right? How to Yeah, deliver it, how to make sure that everything is in planned and it is being delivered, that is also a skill set. correct, ओके, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप जर्नलिस्ट बन जाओ और फिर आप ग्रो करोगे. यू कैन नॉट. यू विल हैव टू हैव वन स्किल फॉर विच पीपल शुड रिकॉग्नाइज यू. इसलिए हम लोगों का नाम क्या था? मेरा नाम विजय अजय विशाल अमोल, मैं यहीं पढ़ के बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा. मेरा नाम विजय अमोल अजय विशाल संयोग नहीं है. मेरा नाम विजय है क्योंकि बिकॉज आई हैव एन आइडेंटिटी विद दैट नेम. ओके, सिमिलरली यू नीड टू हैव ए प्रोफेशनल आइडेंटिटी वेयर पीपल विल से ओके, अजय जैन, ओके यार बुला लो उसको, तो ये धंधा चला देगा वो. ओके, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट. आई, मैंने बहुत सिंपल उसमें बताया. विशाल जी कैन ऐड, अमोल संयोग जी कैन ऐड टू इट. So no, it's a very relevant question first, Ajay. वो बड़ा debate चल रहा है आज की डेट में विजय जी with AI coming in and really disrupting each field, right? Particularly technology and everything will be disrupted. And I think आपने जो कहा कि you need to have be known for skill set, so that is regardless forever,
that is not going to change. Maybe if you get too attached to one field and one domain, you need to really try different thing, and that's why this session is so very relevant. So Ajay, to your point, probably you need to have a path, right? You cannot be, but you don't need. My personal take is you. जो आपने कहा था ना विजय जी कि everything has a lifespan. Being a learner doesn't have a lifespan. The learnability is a skill set, a lifelong skill set. Perfect. So in आज की डेट में that is much more than ever needed. So if you have that, you'll be able to move around from one sector to the other. But there is a real challenge there. If you get too deep into one domain, one industry, one company, you are not future ready and you will be disrupted. You are taking too much of a risk for your own career, I guess. So I think know for your skill set, be a lifelong learner. That is the skill set which will forever be there. My personal take is do try different things. Then only you can really experiment and be future ready. That's just my take. Very Thank you well. so much, Vijay Jain, Vishal ji. Thank you. Thank you. Thank you for that question, Ajay. And Amol, you're next, and after that, Rajiv. Perfect. Vijay ji, first of all, very impactful session, and I think your ability to simplify it for us was really impactful, right? इतना इतने साधारण तरीके से सिंपल फॉर्मूला आपने बता दिया हर चीज को असेस करने का. दैट वाज वेरी गुड. एक सवाल जो काफी बारी आता है, हम लोग वी आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ देयर, राइट? आई मीन हम लोग भी मिड, क्या बोलते हैं, लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस होता है, हम लोग को मिड करियर क्राइसिस में, ठीक है. पर वेरी ऑफन वी कम अक्रॉस पीपल, एंड आई एम श्योर वी विल फेस दैट एज वेल, वेयर दे आर सेइंग कि यार हम लोग तो स्टक हैं, लाइक आई डोंट थिंक वी आर गोइंग एनीवेयर. शुड वी चेंज इंडस्ट्रीज? Should we do something else? What would be your advice for them in those situations? And I want to speak very specifically in the context of our today's conversation, not general, career wise, but where people say कि नहीं मैं इस इंडस्ट्री से निकल के दूसरे इंडस्ट्री में चले जाऊं. Broken more. Yes. Is it only me or is it Vijay ji? Ek second. Is it only me or No, it not is getting? breaking. It is breaking, right? Okay. It is breaking. Okay. I'll repeat No, myself. Amol, We Amol, could not hear you. Vijay ji's. Acha, Vijay ji, okay. Vijay ji, it was a little bit of connectivity issue. Could you just... I got dropped. Yeah. Yes. Yeah, please. After his question, we were not able to hear your answer. So could you just start again, Yeah. please? Thank you. So मेरे को question clear नहीं हुआ. Basically, you are saying in mid-career crisis, you are talking about that what should we do next, or we should stay where we are, or some other organization we should move to. यही question है ना मोदी? That question keeps coming to us also very often, right? अब हम उस समय एक जवाब दे देते हैं कि यार आप ये कर लो, पर वो हमारा एक बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव होता है. बी गुड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. जी, तो इसके अंदर आपका जो है क्वेश्चन जो है ना, उसके आंसर्स आई हैव गिवन मोस्टली इन द 3 डेक्स. ओके. जब आप उसको नैरो को सोच रहे हो ना, वो नैरो नहीं होता कुछ भी. ओके. सी आइडिया इज ओनली वन. If it is with so many people, then it's not an idea. Okay, it's everyone knows it, everyone has that thought process, then it's not an idea that you have in your mind or you want to do something. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसके अंदर फाइंड आउट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फर्स्ट, या जिसका एक्सपीरियंस हो उसके अंदर, फील्ड के अंदर. दिस इज वन थिंग वी डोंट डू. ओके. मैं बैठा रहूँगा, सोचता रहूँगा यार मुझे ये करना चाहिए, अभी मैं जॉब में कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, या टाइम है मेरे पास, मुझे साथ में एक स्टार्टअप शुरू कर लेनी चाहिए. ओके. और मैं थोड़ा सा, जो कि आजकल सबके माइंड में ही आता है, हर कोई जिससे भी मैं मिलता हूँ, एवरी सेकंड पर्सन इज सेइंग आई एम डूइंग ए स्टार्टअप ऑन द साइड. ओके. वो साइड का मतलब क्या है कि आप वही कोडिंग कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो विच हैज़ नो सिग्निफिकेंस, मे बी सम मॉनेटरी बेनिफिट फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट लॉन्ग टर्म नहीं है.
तो मेरा सजेशन ये है कि उसको अच्छे से आर्टिकुलेट कीजिए। पेपर एंड पेंसिल टुडे आल्सो होल्ड्स द की। आप लिखिए उसको, आइडिया को, और उसके बाद उसमें चार, उस फील्ड के अंदर दो चार पांच जितने भी लोग आप ढूंढ सकते हैं उनसे मिलिए। एंड पीपल आर इन जनरल, पीपल आर वेरी ओपन, दे विल गिव यू टाइम। इफ यू विल से कि सर मुझे ये समझना है, या भाई मुझे ये पूछना है इस बारे में, तो बताइए। तो अगर जब तक आपका वो आइडिया सॉलिडिफाई नहीं होता है, देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग। ओके, बिकॉज 10,000 आइडियाज कम टू माइंड। सेकेंडली, आप मिड एज क्राइसिस की बात करो, करियर क्राइसिस की, मिड करियर क्राइसिस की। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द कंट्री इज फेसिंग, एंड दैट्स वेयर AI is, going to rattle, like Vishal ji also said, all the domains, because most of the people in job sector specifically, if you look at that, they are somehow related to tech field, be it software development or anything. And a lot of new things are going to come, which are going to change. Now, I give you a classic example. I'm mentoring one of the person through JITO only, and he said कि भैया मेरे को कोडिंग करना है। एंड ही वाज गोइंग टू यूएस टू स्टडी, कि मुझे, मैं वहाँ पे जाके, मैंने कहा क्यों जाना चाह रहा है, कह रहा है कि मुझे कोडिंग में मेरी एक्सपर्टीज है, आई एम वेरी गुड इन कोडिंग, आई वांट टू डू इट। सो आई सेड व्हाई डू यू वांट टू गो डू कोडिंग, व्हाई डोंट यू वांट टू डू creating the algorithms, which is a one level, lower in terms of uh, the process. बट आज के टाइम जो भी एआई भी चलेगा वो भी एल्गोरिथम पे ही चलेगा। व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट दैट? तो आपकी जॉब के अंदर भी, आपके वर्क स्पेस के अंदर भी, देयर माइट बी समथिंग दैट इज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मिसिंग today, or that might be requiring some attention that you can identify. मगर कोई आइडिया भी बुरा आइडिया नहीं है, आप उसको आर्टिकुलेट कीजिए। अगर वो आइडिया सिर्फ आके, अगर आप उसको पेपर पेंसिल पे नहीं लिख सकते ना, तो वो ऐसे ही है, वो टाइम पास है खाली। आई कैन से इट दैट कैंडिडली। नहीं, गुड पॉइंट विजय जी। और मैं Okay, कहूँगा thank अमोल, you. ये वेरी ऑफन happens, I think, Vijay ji, what Amol was saying, ki if you are very often we feel like stuck. और stuck में जितने लंबे रहेंगे उतना ही I guess we are creating the more issues for the future. And only way to come out of this being stuck is to take action, not in a generic way कि idea है कुछ side में चल रहा है जो विजय जी आपने बोला, to be more intentional, to really try it out. And I guess that's a very risky territory, more risky now than ever. To assume कि यही जॉब चलती रहेगी, यही कंपनी चलती रहेगी, कंपनी is doing good. We are a product, so we are creating our own obsolescence. It's a matter of time then. So I think that's why call for action, I believe, is pushing, sign up for something, try something out. That's the only way I see, at least. And when क्या होता है कि जब when we keep thinking, it creates more worry. When you start doing, you get energy कि यार कुछ, you feel happy कि मैं कुछ कर रहा हूँ. Hmm. And I think I just in Accenture we use this term quite often, and it's very relevant for all of us. Reinvent. You have to reinvent yourself, and the reinvention के लिए बड़ी important चीज है to change your coordinates, change people who you talk to forum like this, talk to people from different background, mentors like Vijay ji and others. That's how we get into the action mode. So we keep thinking and keep worrying and keep hearing again and again कि jobs are going to be disrupted, क्या करूँ मैं, क्या हो जाएगा. It's just a sad feeling. So that's just my Yeah. take. Yeah, and Vishalji, I think when you and I have met, right, I think you had said one more thing: progress over perfection. हाँ, बिल्कुल, I बिल्कुल. think that is also a great message. Yeah. Okay, so great. So, Rajiv has been waiting Then just patiently. just to So, let me complete just, yeah, okay. Yeah, Vijay, you were saying something? Yeah. just to complete well what Vishal Bhai was saying, and easiest way for to see something else is within vertical, horizontal of wherever you, whatever you are doing. Okay, so it's still in your little bit of comfort zone, where you know the lingo of the trade. Okay,
but at the same time, you are just moving either horizontally or vertically to, get out of that uh, trap. Okay. So shall we move to Rajiv's question? He's been waiting so patiently. Rajiv, go ahead, please. Yeah. And much or Rajiv, we're not able to hear you well. Audio, a little bit. You can just check your audio. is it audible now? Yeah, yes, absolutely. Perfect. Okay. I was saying Jai Jinendra Vijay ji or aap sabhi. Thank you so much for organizing this session. The one question which I asked Vijay ji on the side while Anmol ji, Sayong ji was giving the presentation on JPF was returning back to India, right? I know it is all dependent on individuals' situation, circumstances, but why I'm asking this question is everywhere I see around me here in Sydney or in general Australia, people are now moving back to India, right? And obviously there's a growth story and whatnot that I am hearing from people, even from my family members who are still based in India. One challenge that I see is my child who's now in high school, very soon he'll be moving to college, doesn't understand, or he understands Hindi, but he would not be able to, be very effective based on the education he's received here. I'm not sure whether he'll be able to adapt to the, the competitive environment we have in India. So based on Vijayji's experience of, working in global countries, and he has now moved back and I believe settled in India. I just wanted to hear his thought and perspective on what is your guidance, Vijayji, in this matter. See, I think more and more kids will move to high school as they will grow up, as they move to high school. It will become even tougher for you to move back. Okay. Um, uh, because age right now is such that they can adapt. I have seen, even yesterday we have somebody moved back from US to Delhi. Okay. Um, there will be challenge. Okay. There will be challenge, but it's easily addressable. The quality of schools, the kind of schools you look in India, they are amazing. You can get international curriculum schools. You can get the same curriculum that you have in Australia, same schools. Okay. So all I suggest is um, uh, they hope challenges will be there. Okay. There will be challenges. There will be hardships. Okay. But again, if you're willing to take that challenge, then I think this is the place to be in right now. Okay. Uh, you want to secure your 5 years, or you want to secure, you know, your next 40 years or 25, 30 years. That's the call everyone needs to take from time to time. Okay. So again, I think look at from their education perspective, the schools that are available in India, if that is the only concern. Okay. You will find the international curriculum education and all those things. And believe me, when you talk about that competition, it's better to feel that now at this age rather than, at a later stage in their life when, choices become lesser and difficult. Thank you. And any specific, like I know these reasons, but it would be good to hear from you. What are some of the reasons which one should consider to, move back to India? Like any particular, in your own circumstances, like if you have chosen to come back to India or you have mentored people who have moved back to India, anything that would, propel that decision sooner than later. Make sure you have your work is established here. Okay. And you have a stable income running in India from Indian sources before making a move. Okay. This Okay. is my experiences. I decided to move in 2009, and I took good 2 years to move back to India. Slowly, I started coming, staying more. For earlier, I was coming for a week. I started staying for 3 weeks. Then I started looking for work for myself, whether
then I got the job, then I moved. I didn't move without having a job in my hand. Otherwise, you will get frustrated. I don't want to tell you all the good things. Okay. Otherwise, you will get frustrated because you don't have a job, and at the same time, expenses are happening. And when you are moving back, your initial expenses will be very high. So that's why I'm saying I split those things over 2 years. But unfortunately, I don't think you have that much time now. So you will have to put it in the front gear and then, start looking for opportunities in India, get the opportunity. Before that, come visit with the kids, spend some time, take vacation, holidays, and the city, basically, you are thinking that you will settle down, get a, feel of it. And this is exactly what I was trying to communicate in the whole presentation, that it's not only one shift. It's not only financial shift or anything, or for growth, or you are getting promoted or anything. It will be whole 9 yards you will have to see. And even if one clog in the wheel, if it is weak and it's not working, it will make sound. Okay, you don't want to do that. So make sure that everything is covered to the maximum of your potential or anyone's potential. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for all that. Yes, and being mindful of time. So just checking with everybody, is there anyone who would like to ask one last question before we formally thank Vijayji and end the session? Okay. Okay, so we can. So fantastic. Thank you very much. Thank you so much, sir. बहुत मजा आया आपसे बात करके, and I know I could go on and on and on, and we could all go on and on, but being respectful of time and saying thank you again for sharing those wonderful insights. And we know how giving you are, and I'm sure people will be reaching out to you, and I know we can reach out to you at any time. Thank you so much for a fantastic, insightful session. Anyone, any last statements in terms of gratitude or thanks to Vijayji? Sanyog? Wonderful. I am not looking to move beyond boundaries, but I have more than one page of notes here because these are some of the questions which people also they ask us, and I mean I really just the insights that you talked about, coding versus algorithm, talking to subject matter experts, and Vishalji talked about learnability. I mean, there are so many things, doing gives energy. So every product, we have a cycle 25 to 40 years. And of course, I've not refined my notes, but I have so many bullet points over here that I loved it, and I'm going to put it in my, learning book. So Vijayji, thank you so much. You are in such high demand, and I am always hesitant to send another mentee to you. I have a few of them, and I've been thinking of maybe I'll ask you that maybe you can take a group mentoring session for them, because there are so many people who say, "Hey, please connect me to Vijayji." So thanks for being part of the mentorship program, and really, really appreciate it. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.